Good morning, students. In this video, I will tell you how to find the value of bigger angle associated with the trigonometric function. As you know, the 5 standard angles, sine 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Other than these angles, there are also the infinite standard angles by which you can find the value like the same. This is sine 90 is equal to 1. By the same way, sine one more angle and other angles also is equal to 1. There is like sine 30 is equal to sine 30 degree is equal to 1 by 2. Similarly, sine 150 degree is also 1 by 2. And then other angles also is equal to 1 by 2 with sine. Cos also, tan also, cot also. So there are infinite angles, means any type if we put with the sine, with the cos, with the tan, will have the some value according to their domain and range. But how to find the angle, such type of angle, value of the bigger angle, means more than 90 degree or less than 0 degree, also then in the negative case and in positive case. There is a method, not to learn, only to understand. The method is there that you can find the value of any bigger angle which is more than the 90 degree or less than 0 degree with any trigonometric ratios. They say if anybody asks what is sine 2 under 10, so you can tell without learning. Ab kaise? How? I will tell you. As you know, this is the graph. First you note down, because I will rub this, then I will explain again. So this is the graph, x-axis, y-axis, minus x-axis, minus y-axis. As you know, this is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay, first, second, third and fourth quadrant, because quadrant means the 4 parts. What is the means? And you know also in the first quadrant, if you plot the points on the graph, then in this plus comma plus means both are positive, x coordinate and y coordinate, both coordinates are positive. In this x coordinate negative and y coordinate positive, because negative and positive. In this both are negative, and in this x is positive and y is negative. But in case of trigonometric function, also we have to find, we can say the which one is negative and which one is positive. In this quadrant, you can write all t ratios, trigonometric ratios are positive. All trigonometric ratios are positive in this first quadrant. मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, चाहे जो भी एंगल हो, बट एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये तो 0 से 90 है. देयर इज 0 अप टू 90. इन दिस द साइन थीटा एंड कोसेक थीटा विल बी पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव. मतलब जो tan बचा, cot, sec and cos, these are negative. Only sin theta and cosec theta are positive. In this, cot theta and tan theta are positive, others are negative. In this, sec theta and cos theta are positive and others are negative. You can note down and write the others are negative in these 3 quadrants. जो लिख रहे हैं वो पॉजिटिव है, जो नहीं लिख रहे हैं वो नेगेटिव होंगे.
अब नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग क्या है वो अभी हम बनाएंगे। एज यू नो दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अप टू हियर 90 डिग्री, मतलब 0 to 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन कॉस टैन जो तुमने पढ़ा, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव वैल्यू, साइन 45 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू, टैन 30 1/√3 पॉजिटिव वैल्यू। तो ये सब 90 के अंदर जितने भी एंगल की वैल्यूज निकालेंगे you will get only positive value. It means at 0 to 90 which formula you have read, 90 minus theta, जो भी थीटा होगा वो अगर 90 से कम है, less than 90, it means comes in the first quadrant. Possible? If this is called the complementary angles. The complementary angles always comes in the first quadrant. भाई सीधे सी बात, जो 90 से छोटा है तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। बट इफ यू ऐड एनी एंगल इन 90 डिग्री, व्हाट यू विल गेट 90 प्लस थीटा, और जैसे ही 90 में कुछ भी ऐड होता है यू विल मूव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा एंड दैट इज 90 प्लस थीटा। It is 90 minus theta, but up to here 90 degree. And in this, at this stage, if you add anything, it will come into the second quadrant. Similarly, up to here, how much angle from here? 180 degree, because it is a straight line. And 180 degree, if you add anything, 180 degree, where you will move? In थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि जैसे ही 180 डिग्री से ज्यादा होगा ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द 180 डिग्री, अगर कुछ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहां पे 180 से, तो वेयर यू विल गो? अगेन इन द सेम क्वाड्रेंट, मतलब ये कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा 180 माइनस थीटा डिग्री। थीटा इज द एंगल which is less than 180, कुछ भी हो सकता है that is, but you will suppose that it is less than 180 and more than 90, तो ये हमेशा इसी में रहेगा। if you add in the 180 degree you will have here in third quadrant, but third quadrant it is up to here 270, क्योंकि 90 और ऐड कर दो, 180 यहां तक 90 90 90 270 डिग्री। If you add anything in 270 degree, where you will have? In the fourth quadrant. But if you subtract anything from the 270, you will have in the third quadrant. But when you add again 90 90 90 90, it is here 360 degree, a circle at a point 360 degree. If you add in 360 degree anything, what you will have? You will go again in first quadrant 360 plus theta, मतलब one round, after completing the one round you will have again you will go into the first quadrant. लेकिन अगर हम 360 से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो where you will go? In the fourth quadrant. ये एंगल्स बहुत काम आएंगे because you can find out the more than the value of the like sin 180 degree. तो sin 180 degree means we will have here cos 270 डिग्री, मतलब हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर 360 डिग्री तो इस क्वाड्रेंट की। बट इफ इन सम केसेस मे बी साइन 620 डिग्री, अब 620 डिग्री और हमारा ये तो 360 था, मान लो यहां तक आ गए तो 360 प्लस समथिंग, लेकिन 620 डिग्री का मतलब है कि विल हैव हियर after completing the one round again we go to something in the 620 plus 90, how much? And two round पे कितना होगा? 720,
720 मतलब यहां थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. बट आफ्टर कंप्लीटिंग द वन राउंड you have again reach into the first quadrant. तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट फिर नहीं पहुंच सकते? दैट मे बी हैपन. सो you can complete the 1 round, 2 round, 3 round, 4 round, 5 round like this. And if you complete the n round, n मतलब 1 2 3 4 5 6, then if you add there n round मतलब n into, अब ये 360 को हम I can write in the terms of pi, that is 2 pi plus theta. 2 pi means 360 n राउंड. तो 360 को अगर 1 से कंप्लीट करेंगे तो फर्स्ट राउंड, 360 को 2 से कंप्लीट करेंगे तो सेकेंड राउंड, 360 को 3 से कंप्लीट करेंगे तो थर्ड राउंड. तो दिस इज द मीन्स 2n pi. You can write this one as 2n pi plus theta. मीन्स ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है. That is 2n pi plus theta comes in the first quadrant after completing the n round. लेकिन जैसे ही हमने, हो सकता है कि after completing the n round, suppose 4 राउंड आ गया. 4 राउंड मतलब यहाँ पे आ गए हमने एक बार ऐसे, 2 times, 3 times and 4 times and subtract anything. तो यानी फिर से वापस कहाँ पे, कहाँ आएंगे? इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो दीज आर द एंगल. अब देखिए समझिए, दीज आर द एंगल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. दीज टाइप्स ऑफ एंगल यू विल गेट, जो भी है. इन दिस क्वाड्रेंट यू विल गेट द दिस 2 टाइप्स ऑफ एंगल. इन दिस क्वाड्रेंट you will get these 2 types of the angle, and in this quadrant you will get these 3 types of the triangle. Means in first and fourth quadrant you will get the 3 types of angles, and in the second and third you will get the 2 types of the triangle. But how to find the value of the sine other, means how will you make the formula? So just I rub this, you note down. I have the picture in my mind. You also keep this figure in your mind. Then you can no need to learn. Then you can understand and you can get any value of the trigonometric ratio. यस इधर हम बना देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब you have read sin 90 minus theta is equal to, what is 90 minus theta comes in first quadrant. Sin is there and I told in the first quadrant every trigonometric ratios are positive, मतलब पूरे से. तो ये होगा तुम्हारा cos theta. पहले sin प्लस लगा. हाँ, one more thing, in first quadrant and in third quadrant means 90 degree and 270 degree. The ratios are changed. मतलब sin cos में tan cot sec cosec, मतलब ये चेंज होंगे. जैसे तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन क्लास 10 ऑल्सो. इन केस, अब तो यू कैन राइट in case of 90 degree and 270 degree, whether it is 90 minus theta, 90 plus theta, 270 minus theta, 270 plus theta. In these 4 cases, the trigonometrical ratios will change accordingly. The complementary angle which you have read in class 9 and 10. मतलब sin 90 minus theta is equal to cos theta. Similarly, it will change in a 270 degree also. But sine you will put, sine SIGN, sine you will put according to quadrant, जो भी quadrant में दिए गए.
तो no need to write this one, but sin 90 plus theta, how to find the value of this? 90 plus theta, just I told it will come into the second quadrant. In the second quadrant sin is positive, हमने बताया sin पॉजिटिव, तो पहले प्लस लग गया. 90 डिग्री है तो इट विल बी cos, क्योंकि हमने बताया 90 में चेंज हो जाएंगे. एंड थीटा द सेम एंगल, sin 90 plus theta is equal to cos theta, sin 90 minus theta is equal to also cos theta. But if you have sin cos 90 plus theta, as you know, second quadrant 90 plus theta means second quadrant, cos second quadrant में नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पुट कर दिया. एंड ड्यू टू दिस 90 डिग्री cos will change into the sin and this theta will be here, तो माइनस साइन थीटा. तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू लर्न दिस वन, ओनली यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग. tan, आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90 प्लस थीटा, बिकॉज 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, tan जो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, एंड ड्यू टू दिस 90 tan विल चेंज इनटू द cot theta, minus cot theta. Similarly, other three ratios. Okay. Now I tell you, cot, suppose 180 minus theta. One more thing I want to dictate. In अभी 90 और 270 के लिए कहा था कि वो टी रेशियोज चेंज होते हैं, but for the 180 degree and 360 degree, whether you apply the formula of 180 degree and 360 degree, the t ratios will be same. मतलब sin sin ही रहेगा, cos cos, tan tan, cot cot, मतलब there will be no change. तो cot 180 minus theta, see the angle 180 minus theta comes in the second quadrant. Cot is negative in the second quadrant, तो minus sign. But due to this 180 degree, cot will be, cot remains same, and this theta. Now sec 180 minus theta, again this second quadrant, sec negative, but due to 180 sec will be sec theta. Cosec 180, कोसेक इज पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव कोसेक होता है तो कोसेक पॉजिटिव, कोसेक विल बी कोसेक बिकॉज 180 एंड थीटा. तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू. सम मोर, अब हम बात करेंगे साइन 360 माइनस थीटा. 360 minus theta comes in this quadrant, in the fourth quadrant. 3 and sine is negative in the fourth quadrant. 360 degree means sine will remain sine, and theta is there, minus sine theta. तो करना क्या है कि according to this angle you have to see the quadrant, and in the quadrant which one is negative, which one is positive, you have to put the sign. अगर tan थीटा की बात करें, tan 360 माइनस थीटा, तो इट विल बी ऑल्सो निगेटिव, माइनस tan थीटा. बट फॉर द cos, cos इज पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो cos थीटा. इन केस 270 minus theta means in the third quadrant, and in third quadrant the cos is negative, so minus sign. And I told in case of 270 degree the cos will change into the sine, so sine and this theta, this is the 270. So by this way you can find the value, means no need to learn, only see the imagine the figure
Here the sine cos positive, sine cosec positive, here tan cot positive, here sec and cos positive, others are negative. In this every trigonometric ratio positive. For example, one I tell you this 1000 1020 degree, find the value of this. अब देखो ये काफी बड़ा है, it is big one and you have to find the 1020. You can break in the parts. अब ये 360, 720 and 1080 के आसपास है, मतलब कि 3 into you can break in 3 into 360. This is 1080. Okay, but this is 1020. अब क्या माइनस करना है 20 लाने के लिए, इसमें से 60 minus 60 degree. And you know the formula is sin, हमने क्या कौन सा फॉर्मूला अभी बताया, n into 360 minus theta. This will come into the fourth quadrant, means minus sin theta degree. And in this case it will be minus sin 60 degree, then minus root 3 by 2. This is the value. Using this formula, 360 means 2 pi, 2n pi minus theta. So sin 2n pi minus theta minus sin theta, and this is equal to, it means minus sin 60 root 3 by 2. तो इसमें वैल्यू को लर्न नहीं करना, तुम्हें सिर्फ वैल्यू 0 से 90 तक याद होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन फाइंड बाय योर ओन. जैसे लिखा है tan माइनस 1450 डिग्री, अपने आप से ले लें, इट इज माइनस, पहले तो इस माइनस को कम करें. आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो tan f माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा. सो यू कैन राइट माइनस 1450. Now break again into 360 and into 360, मतलब कितने टाइम्स उसको राउंड करें कि जिससे कि ये पहुंच जाए. तो if you multiply 4 into 360, what you will get? Yes, it is 50 means plus 10 degree. तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बट यू विल हैव द फॉर्मूला ये ऐसे. तो you can write minus 10 4 into 360 plus 10, and this is the form tan 2n pi plus theta is equal to tan theta. Why? This angle comes in the first quadrant, tan is because it is 360 n into 360 and 360 जहाँ पे है तो tan रहेगा, तो tan theta. तो यू कैन राइट माइनस ये वाला tan 10 डिग्री. अब 10 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम तो बाय विद द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यू कैन सी. तो बाय दिस वे यू कैन चेंज एनी एंगल, बिगेस्ट एंगल, बिगर जो भी हो, बड़े से बड़ा एंगल, यू कैन चेंज लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री यू कैन चेंज. So by this way I end up this video, and in the next video I will tell you the another thing. Okay, so God bless you. Thank you.